Congratulations to everybody. Sri Narasimhan ji, Governor Ji, Sri Chandrababu Naidu Garu, Chief Minister, my ministerial colleagues, Sri Venkaiah Naidu and Dr. Jitendra Singh, Dr. Radhakishan, Secretary Space, Professor U.R. Rao, Dr. Kasturi Ranganji, my dear scientists gathered here and fellow citizens of India. My congratulations to our brilliant space scientists and the Department of Space for yet another successful launch of the Polar satellite. We have perfectly placed by 5 satellites into their orbits 660 kilometers above the Earth. This fills every Indian's heart with pride, and I can see it reflected in the joy and satisfaction on your faces. Fascinated by space technology, I feel specially privileged to witness this event in person. India's advanced space program puts her in an elite global group of 5-6 countries today. This is one domain in which we are at the international cutting edge, a domain in which we have pushed beyond mediocrity to achieve excellence. We have launched satellites of advanced nations. PSLV itself has launched 67 satellites, of which 40 have been foreign satellites coming from 19 countries. Even today's satellites are all from developed nations, France, Canada, Germany, and Singapore. Truly, this is a global endorsement of India's space capability. Inspired by Atal Bihari Vajpayee vision, we have sent a mission to the moon. Another is on its way to Mars as we speak. I personally follow it with great interest. We have also developed our own satellite-based navigation system. I am told this will be fully deployed by 2015. Moreover, we can be proud that our space program is indigenous. We have developed despite international hurdles. Generations of our space scientists have worked to make India a self-reliant space power. We owe them a big thank you. Our journey into space has come a long way from its humble beginnings. It has been a journey of many constraints and resource limitations. I've seen photographs of a rocket cones being transported on bicycle. And मैं जब वो फोटो देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि साइकिल के ऊपर हमारे रॉकेट के पीसीस को ले जाया जाता था. वो भी एक दिन थे. Our first satellite, Aryabhat, was made
in industrial states in Bangalore. यानी मंजिल हमने कहां से कहां पहुंचाई है, और ये सब क्रेडिट आप वैज्ञानिकों को जाता है. Even today, our program stands out as the most cost-effective in the world. The story of our Mars mission costing less than the Hollywood movie Gravity. मैंने सुना है कि हॉलीवुड मूवी जो ग्रेविटी मूवी बनी है उसमें जो खर्चा आया है उससे भी हमारे मार्स मिशन का खर्चा कम है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. Our scientists have shown the world a new paradigm of fuel engineering and the power of imagination. Friends, the success of ours had deep historical roots. हम जानते हैं मानव जीवन की यात्रा उपनिषद से शुरू होकर के उपग्रह तक पहुंची है. ऋषियों ने उपनिषद से शुरू किया था, आप वैज्ञानिकों ने उपग्रह तक पहुंचाया है. इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, including in the field of space. An understanding of the cosmos and its relationship to life and science is deeply rooted in our ancient thought and knowledge. Our ancestors had conceived of ideas like shunya and flying objects. कभी कभी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अगर मानव जात को जीरो न दिया होता तो आज शायद विज्ञान इतनी प्रगति नहीं कर पाता. इतनी बड़ी भेंट हमारे पूर्वजों ने दी है. The works of visionaries like Bhaskaracharya and Aryabhatta continue to inspire scientists. Many misunderstand space technology to be for the elite. That has nothing to do with the common man. और मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी गलती इस परसेप्शन से है. हमारी पहली जिम्मेवारी है कि इस परसेप्शन को खत्म किया जाए कि वैज्ञानिक सिद्धियां अल्टीमेटली सामान्य मानवी की जिंदगी के बदलाव के लिए है. और जब तक हम ये नहीं करेंगे, कभी कभी शरीर के कोई पुर्जे पर पीड़ा नहीं होती, तब तक हमें उसका मूल्य समझ नहीं आता. यूं शरीर चलता रहता है, लेकिन एकाध जगह पर कुछ गड़बड़ हो जाए फिर पता चलता इतना महत्वपूर्ण था क्या बॉडी पार्ट. वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी विकास यात्रा में स्पेस साइंस का कितना महत्व है, ये मानव जात को समझाना, उसको अनुभव कराना, ये समय की मांग है. और मैं सभी वैज्ञानिकों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने लेबोरेटरी में बैठ करके जो साधना की है, ये साधना करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है. आपकी ये सिद्धियां सामान्य मानवी तक पहुंचाने के लिए शासन की प्राथमिकता बन जाए. गवर्नमेंट के सारी डिपार्टमेंट सेंसिटाइज हो जाएं, तो देखते ही देखती है दूर सुदूर जंगलों में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का हम एहसास कर सकते हैं. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वैज्ञानिकों के द्वारा की गई ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी, मानव जात के कल्याण के लिए काम आएगी. I however believe such technology is fundamentally connected with the common man. As a change agent, it can empower and connect to transform his life.
technology opens up new opportunities of development and gives us new ways of addressing our challenges. Space may seem distant, but is an integral part of our daily life today. It drives our modern communication, connecting even the remotest family to the mainstream. It empowers the child in the farthest village with quality education through long-distance learning. It ensures quality health care to the most distant person through telemedicines. It enables the youth in a small town with various new job opportunities. Satellite technology has made distance irrelevant. It effectively enables us to reach the unreached. It helps us connect virtually where physical connections are difficult. It has a critical role in realizing the vision of digital India, the power of 125 crore connected Indians. GIS technology has transformed policy planning and implementation. Space imaging enables modern management and conservation of water resources. Through GIS-driven watershed development, it has been deployed in our urban planning to scientifically manage our growing towns and cities. It has also become an important tool in better managing and conserving our natural resources. Whether it be the Himalayan glaciers, oceans and forests and coastal resources or our mineral wealth. Space imagery is improving our land management systems, bringing wasteland into productive use. Our next frontier should be to extend the same to land records, bringing in accuracy and transparency for the common man. और आज मैं समझता हूं शायद गरीब से गरीब किसान के लिए उसकी जमीन के विषय में जानकारी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा कह सकते हैं कि टोडरमल के जमाने में लैंड रिकॉर्ड पर काम हुआ था और शायद उसके बाद नहीं हो पाया। कानून कहता है हर 30 साल में एक बार लैंड रिकॉर्ड को रिव्यू करना चाहिए, नया रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। लेकिन शायद आप वैज्ञानिकों के इस परिश्रम का परिणाम है कि जो काम टोडरमल ने शुरू किया था वो बहुत अधिक वैज्ञानिक आधार पर अब आपके इस रिसर्च के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। Space technology has also evolved into an invaluable asset in disaster management. Satellite communication channels often end up being the only mode of communication. Accurate, advanced warning and tracking of cycle failure saved countless lives recently. We must, as a nation, fully harness this expertise in space technology in our developmental process.